Okay, so we were doing October 2019, variant 21, and today we have to start off with question number 4, part A. अच्छा, question क्या कह रहा है? Identify and explain two differences between MF and unincorporated businesses. MF and unincorporated businesses. तो unincorporated I'm sure आपको पता है. Unincorporated businesses वो होते हैं जिनकी अपनी खुद की separate legal identity नहीं होती, और सोल ट्रेडर बिजनेसेस, पार्टनरशिप बिजनेसेस जो हैं वो अनइनकॉर्पोरेटेड स्ट्रक्चर्स में आते हैं. और एमएफ जो है, एमएफ तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को हम कहते हैं कि इट्स एन इनकॉर्पोरेटेड स्ट्रक्चर एंड it do have a separate legal identity and they are basically owned by shareholders. इसमें owners और जो कंट्रोल कर रहे होते हैं उनकी आइडेंटिटी अलग हो रही होती है. ठीक है, ओनर और बिजनेस की आइडेंटिटी बेसिकली अलग होती है, उसको कहते हैं सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. ये इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस की होती है. लेकिन अनइनकॉर्पोरेटेड जो पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू डिफरेंसेस बिटवीन एमएफ एंड अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस. तो अनइनकॉर्पोरेटेड में तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, पहली बात. अनलिमिटेड, उसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये बात आई एम श्योर आपको पता है. Unincorporated businesses unincorporated businesses will have unlimited liability, whereas MF being a public limited company, it will have limited liability, and the personal assets of shareholders will, थोड़ी सी मैं भूलने की एक्टिंग कर रहा हूं, will not have to be sold in case of loss. यानी कि जो ओनर्स होते हैं इस सिचुएशन में, इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस में, कंपनीज में जो ओनर होता है ना, शेयर होल्डर, उसकी लायबिलिटी सिर्फ उसकी इन्वेस्टमेंट तक लिमिट कर दी जाती है. इन केस अगर लॉस कर दे कंपनी तो शेयर होल्डर्स के पर्सनल एसेट्स पे बात नहीं जाती. इसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी. ठीक है, डिफरेंस टू क्या है? डिफरेंस टू होता है, एक तो ये हो गया कि लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड, और एक होता है कंटिन्यूटी. शायद आपने सुना होगा कि अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस में कंटिन्यूटी नहीं होती. इन केस द ओनर डाइज देन द बिजनेस लीगली एंड्स. एंड जो इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस होते हैं लाइक एमएफ, अगर एक आध ओनर को कुछ हो भी जाए तो फिर पूरे बिजनेस को मतलब खत्म नहीं हो जाता वो. अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस will have lack of continuity, whereas for MF the identity of their owners, जिसको हम शेयर होल्डर्स भी कह सकते हैं, unincorporated businesses will have lack of continuity, whereas for MF the identity of their owners and the company will be different. In case an owner dies, the company will still
continue. The company will still continue. The point is कि अनइनकॉर्पोरेटेड में अगर ओनर की डेथ हो जाती है तो फिर द बिजनेस सीजेस टू एंड, बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता होगा, लीगली एंड हो जाता है, फिर उसको आप नई डॉक्यूमेंटेशन के साथ स्टार्ट करते हो। लेकिन जो कंपनी होती है, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता अगर एक आध ओनर ऊपर भी चला जाए ऊपर चला जाए, फर्क नहीं पड़ता है। सही है, ठीक है। द शेयर होल्डिंग्स विल पास टू द नेक्स्ट पर्सन इन, समझो कोई इसका बेटा है, जो भी इनहेरिट हो जाते हैं एक तरह से, लेकिन कंपनी को पता भी नहीं होता इनफैक्ट। ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर तो नहीं चाह रहा ना कंपनी में, शेयर होल्डर तो सिर्फ शेयर खरीद, जैसे अगर मैंने शेयर खरीदा है तो मैं तो शेयर खरीद के घर पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ। सही है, तो द पॉइंट इज अगर अगर मुझे कुछ हो भी जाता है, ओनर को कुछ हो भी जाता है, तो कंपनी को तो पता भी नहीं होता। सही है। अच्छा खैर, दूसरा डिफरेंस क्या पूछा इसने, डिफरेंस बिटवीन एमएफ एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो जो हुकूमत ने ओन की हुई होती हैं, गवर्नमेंट रन एंड कंट्रोल्ड होती हैं, जबकि एमएफ तो पब्लिक सेक्टर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में है, तो इट विल बी ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स लाइक अस। और एक तो ओनरशिप में बड़ा डिफरेंस होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव्स में भी डिफरेंस होता है कि पब्लिक सेक्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मेनली providing welfare and providing services to the society, whereas mf will mf will not be having this objective, because clearly likha hua hai case mein the objectives of mf are to increase profits and increase market share. This is not what a public sector organization would be aiming for, right? There will be difference in the ownership. There will be difference in the ownership of two sectors. Public sector organizations are owned by government, whereas mf will be owned by private individuals known as shareholders. There will be difference in the ownership of two sectors. Public sector organizations are owned by the government, whereas MF will be owned by private individuals known as shareholders. Second क्या difference होता है, objectives में भी difference होता है ना. The public sector organization will mainly aim for providing the public sector organization will mainly aim for providing services to the society and public welfare. Government basically ये चाहती है ना public welfare. However, MF is having the objective of maximizing, क्या था? Maximizing their profits, and their market share. Basically पहला डिफरेंस जो है वो इनकी ओनरशिप में होता है, और दूसरा जो डिफरेंस है वो इनकी ऑब्जेक्टिव्स में होता है. ठीक है, बेसिकली बिल्कुल नए टाइप का सवाल था. इस तरह के सवाल पेपर 2 में रिसेंटली आना शुरू हो गए हैं, वरना पहले नहीं आते थे. पहले इतने, मतलब इट्स नॉट इजी, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज इससे आपके काफी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे.
ठीक है, कॉपी दिस डाउन एंड याद रखो जब आप कॉपी कर लो, जब आप लिख लो, सो यू हैव टू रीड इट आउट वंस एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट एक दफा तो या दो दफा तो आप रीड जरूर किया करो लिखने के बाद।